हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में अब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल सीरीज के थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है लोकल वेरिएबल, है ना। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल्स बेसिकली यूज्ड फॉर टेम्परेरी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? हम डिक्लेयर एंड यूज इट इनसाइड मेथड। The limitation is what? Its scope is limited to the scope is limited to the method। देखते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकली कैसे क्या है, मतलब इसका। सपोज आई एम डिफाइनिंग वन क्लास दैट इज ए, और inside this class I am using one method m1. I am not declaring the constructor, and inside this if I am using a is equal to 1000. So can you see this? When we have used this a outside all the class, all the methods, then it became a static variable. Now when I take it inside the method, it becomes a local variable. So when I print a here, now similarly when define method m2, passing the self here, and suppose I want to access the print a here. When I run this code, when I create the object a for a class, and when I do a dot m1, you can see the output is 1000. At the same time, when I do a dot m2, when I run this code, so can you see this? For this m2, just a minute, this should be a dot m2 print a. When I run this code for dot m2 method is happening, I have to restart the kernel here before moving in it. When I run this code again, it's referring, suppose I'm changing the variable here again. So you can see when I call this, you can see the Rahul is not defined. Why this was continuously executing previously? हम इस पे बार बार ट्राई कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्कोप में हम ये वेरिएबल को बार बार यूज कर चुके हैं, लेकिन हमने राहुल को यूज नहीं किया हुआ है। तो हमने राहुल एक नया वेरिएबल लिया यहाँ पर। सो फॉर दिस मेथड इट्स वर्किंग फाइन, बट फॉर m2 इट इज गिविंग यू द नेम एरर मतलब राहुल इज नॉट डिफाइंड। अब ये ना तो इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा, ना ही ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। ये केवल अब लोकल वेरिएबल बचा है जिसका स्कोप एक विद इन द फंक्शन है, इसीलिए हम इस फंक्शन के बाहर इसको यूज नहीं कर पा रहे, एंड वी आर गेटिंग द नेम एरर। सो दैट्स ऑल अबाउट द लोकल वेरिएबल। अब देखिए, हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल सीरीज में तीनों टाइप के वेरिएबल्स पढ़े। कौन कौन से? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो लास्ट टाइम इन्फीटीक्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है कि यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स एज वेल एज number of instance variable and number of static variables. So this is a very important topic. And one more important thing is here,
when you pass the data in a function, like we have used this constructor, so these are the instance variable, and these are also the local variable counting. And this is what these are the basically all static variables are here. This, 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 and this. So these all are the static variables. So you must be able to differentiate about the static, local, and instance variable. So for this video, it's all from my side. Thank you.